Hello and welcome back, folks. You are watching the ISL Season 2 brought to you by Notwin Gaming. And now it's a very interesting matchup time. So now we've got a battle in the bottom two, right? We've got a battle where we've got, Odisha FC taking on Hmm. Jamshedpur FC. Now, there's a little bit of a storyline. So Odisha FC last time when the West went up against East Bengal FC, they managed to get not just one but 3 points and opened up their account. Yeah. But Jamshedpur FC lately, they've been starting to lose games, and that's been a cause of concern because when they started their campaign, TT, they were one of the strongest co-op teams. But Hmm. after that, things haven't been working out, have they? नहीं एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वो अभी सिर्फ एक पॉइंट के साथ 11th पोजीशन पे है. सो कहीं ना कहीं जो है जरूरत है कि वो इधर कम बैक करे. बट आज का जो मैचअप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा. अरविंद एंड इट नेट्स जो है वो सबसे पहले भिड़ने वाले. उसके बाद हम लोगों को दिखेंगे डीके एंड वाग्या एक दूसरे के ऑपोजिट पे. सो वाग्या खुल चुका है लाइक पिछले दिन. तो आज आशा कर सकते हैं कि ओडिशा के एफसी के तरफ से एटलीस्ट अनलकी परफॉर्मेंस तो नहीं आएगा. वो जो खेलेंगे उसका आउटकम उनको मिलेगा. You had to say unlucky because I just had a little bit of a laughter because it's a DK versus Vagya matchup. Now, the unluckiest player of eISL Season 1 against the unluckiest player of eISL Season 2. Who's got worse luck? Well, we will find out at the end of this game. But Arvind and 8 Nets, these are the two serious boys over here. Nate, a player that has been winning majority of his games and giving Odisha FC a good start, right? He's been sort of one of those players that you rely on. Earlier, we used to see Bhagya opening up, playing the opening first games, but then they kind of made a change in the order. And this is something good that has been working out for Odisha FC, I must say, because what Nate is doing is he's winning that first game. So they kind of they kind of get to play the next two a little bit under a stable state of mind, right? Otherwise with Bhagya something or the other used to happen, and then things used to go awry, and one thing after the other, and they used to go tumbling down. So this is one of those things that they changed and has been working out. And Bhagya, like you said, उनका भाग्य थोड़ा बदल रहा है क्योंकि even against Shine, then things got really close towards the end, but still he managed to come out with a winner. With the scoreline was 3-2. But the first matchup, folks, Arvind against Nate. Well, TT, if I have to ask to make a prediction on this one, who do you think is going to come out here? आई थिंक एटनेट, क्योंकि जिस तरीके से उनका पिछले 2 गेम्स गए हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा अभी. एंड वो दिखा के आए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गेम पे चले फिर दूसरे गेम पे नहीं चले. वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं. सो चांस मुझे लग रहा है एज पर माई प्रेडिक्शन कि शायद हम लोग ओडिशा से जीतते हुए देखे ये गेम. बट अभी जो शुरुआत है बहुत कुछ एक्शंस होंगे. बट अरविंद उनको थोड़ा सा देख के खेलना होगा क्योंकि उनके लिए सिचुएशंस अभी तक थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डाइसी गया है. Now this is where we have to give our viewers a little bit of perspective. So Jamshedpur FC are right now at the bottom of the table, but they have played one less game, and looks like Arvind could have created a very good chance. But yes, so they've played one less game and are trailing by 2 points against Odisha FC. They're yet to win a fixture. All they've managed to do is get a draw, and I think that was in their first opening game. But after that, things have gone downhill for them, and this is the perfect game where they could change their fortune, right, TT? या एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं इटनेट्स की, तो इनका भी अभी तक मेरा देखा गया सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ प्लेयर में से एक है. क्योंकि जब वो गोल कंसीड भी करते हैं फिर भी एक छोटा सा स्माइल रहते हैं चेहरे पे, और जब वो गोल मारते हैं तब तो ऑब्वियसली वो खुश होते ही हैं. तो एक चीज़ जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत शांति से पहले वो समझने की कोशिश करते हैं अपने ओपोनेंट को, एंड उसके बाद जाके कुछ अटैक बनता है. बट इस बार अटैक बन रहा है जमशेदपुर एफसी के लिए, और बीचों बीच से बॉल निकालने की कोशिश भी था. बट वर्जिल वैन डाइक के साथ उनके सामने चाहे रोनाल्डो हो या एम्बापे आपको उतना चांस मिलता नहीं है. Yeah, at least the FIFA 23 Virgil van Dijk is Yeah. so solid, right? If not in the real life, of course, after injuries.
has had a lot of Yes. trouble coming back. And now look at Nate wanting to build up that attack. And even Virgil van Dijk accepted himself, said in person in an interview, he forced himself to play a lot of games where he should have taken that rest. And he hasn't gotten himself back to 100%. And well, hurts me the most. But, well, for now, at least getting back to eISL. So what we've seen Arvind is in the first 18 minutes of the game, he's created a lot of chances. He's trying to get into the final third, but needs to somehow break the defense, which Nate hasn't allowed him to do so. बट इस बार बन गया था फिर से, लेकिन इस बार मिलिटाओ के साथ देखिए इतना बार अगर चार्ज करेंगे, एक बार ना एक बार ताला तो खुलेगा. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओडिशा एफसी को भी कोशिश करना चाहिए काउंटर पे जाने की, लेकिन इस बार एक बार फिर से देखिए रन्स तो आ रहे हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके डिफेंस किया जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा रिस्की सिनेरियोस बनाते जा रहे हैं ओडिशा एफसी के ऊपर. अभी के लिए तो चलिए बहुत ज्यादा शानदार एक्यूरेसी के साथ डिफेंस किया जा रहा है, लेकिन अगर एक बार के लिए भी चूकेंगे वही जगह पे गोल कंसीड भी कर सकते हैं. सो एटलीस्ट मिडफील्ड के आसपास बॉल को लेके जाने की कोशिश करना होगा ओडिशा एफसी को. एंड इतना डीप अगर खेलेंगे प्रॉब्लम्स बाद में जाके क्रिएट हो सकता है. राइट हैंड साइड से ऑलरेडी हकीमी का रन, लेकिन विद एम्बापे कोशिश उनका यही है कि एक इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दिखाया जाए. रोनाल्डिनियो इंटरसेप्ट किए थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए रोनाल्डो, बट रोडोलिप आए और एक झटके में बॉल छीन के लेके चले गए. Okay. Now, I think with the kind of plays that Arvind has been trying to make, he's utilizing his Jairzinhos, he's utilizing his left wings a lot over here. And now, Nate has sort of figured that way out. And he's constantly just not letting Arvind, do whatever he wants to do with the ball. What I like about Nate is he's giving, he's going for it. Right? He's trying to compete for the ball. He's not giving him that free space to instantly pass, as a result of which Arvind has to get back a little bit. Player lock attempt there. Still wants to keep the passing game on. Saved it on towards R9. Nice pass towards Ronaldinho. Oh, Rudelet saves the. And now a similar routine that we have seen, I think for the 4th or the 5th time, is happening right now. Yes. And इस बार बहुत शानदार चांस था, बट वैंडेसार बचाए. कोशिश तब से बहुत बार कर रहे थे अरविंद, लेकिन शॉट ऑन टारगेट हम लोगों को उतना खास दिखा नहीं था, लेकिन ओडिशा एफसी वो करके दिखाने में सफल हुए. केविन डे ब्रुयना ऑलरेडी अटैक पे पहुंच चुके हैं और अटैक लाइन बहुत शानदार तरीके से बिल्ड भी कर चुके हैं. 2 पास एंड उसके साथ फिनिश भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए ओपनिंग्स, जो अभी दिया नहीं जा रहा अरविंद की तरफ से. बट फाइनली टुवर्ड्स एम्बापे, बीचों बीच एक पास निकालने से पहले इंटरसेप्ट हुआ एंड बॉल गया बैकलाइन के बाहर. सो कॉर्नर मिलेगा और इस कॉर्नर के साथ बॉल तो अपने पास ही रखेंगे क्योंकि थोड़ा पीछे की तरफ बैक पास किए थे. बट एम्बापे टू हकीमी, क्या ये काफ़ी होगा ये बिल्डअप अपने पहले गोल के लिए? अगर ओडिशा इधर पहला गोल स्कोर करते हैं तो मौका मिलता, लेकिन इस बार काउंटर पे, एंड आई थिंक इस पे प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते थे अगर ऑफसाइड नहीं होते तो. Yeah, that's the marketing factor. अगर offside नहीं होता तो, and this comes really important because you have to time your runs, and there have been so many times we've seen 3-4 types of plays being made. Today also, I think not even on one occasion we got to see anybody trying to play the German crosses, right? But right now with R9 went for a heel to heel, but Arvind sees it through, and there you have the first half coming to an end. Nothing really separating the players. This is a little, concerning for me because I haven't seen any innovations in terms of attack from Arvind, at least. I felt he was one of those players who was constantly trying to harass on those counter attacks. He was going down a lot, but Nate had figured out that what he's trying to do. He's constantly just pressing through that wing, going for that cutback, and he's cutting him off then and there only. And then it was reverse, right? Odisha FC then tried to do the same. They kind of were changing the passes,
even went really close to trying to take a shot, but just when they did that, it was getting defended. So that is one of those things that both these players need to work out on, and both of them would want to have a decisive result tonight, right? Settling for a draw, especially right now, because you could see East Bengal, they've dropped one of their games, and this is the seventh one that they played. So a perfect chance to get a little bit higher on the order, and if Odisha FC win that, then they're going to directly go towards that seventh spot. Now the dream of making it to the playoffs could suddenly become true, but now is a good chance, and he converts it. Good chain of passes there, instant 1-2s over there, and no trouble for Lionel Messi making that run, gets a shot, and whizzes past through the keeper for a goal for Odisha FC. What a star, what an opening one. फाइनली ओडिशा एफसी एक और ओपनिंग के साथ अपना स्कोर इंक्रीज कर चुके हैं। बात देखिए, इधर जरूरत है इस गैप को बना के रखने की। नेट इसके पहले भी बहुत बार ये काम करके दिखाए हैं अपने क्लब के लिए, बट क्या अरविंद इधर से गोल दाग पाएंगे? अरविंद को ओपनिंग भी मिला था, लेकिन उसी जगह पे जब वो शॉट लेने जा रहे थे, एक हल्का सा डिसेप्शन आया इधर मिलिटाओ की तरफ से, जिसके बदौलत बॉल सही पोजीशन पे उनको मिला नहीं एंड वो फिनिश नहीं कर पाए। बट काउंटर पे जाने की कोशिश ओडिशा एफसी, मेसी, रोनाल्डो, बॉल कंट्रोल अभी भी ओडिशा के पास ही। बहुत अच्छा बिल्डअप चल रहा है उनका। ये चीज आप देख पाएंगे कि फर्स्ट हाफ तो था, या वी नो कि अरविंद की तरफ से अटैक हो रहा था। फर्स्ट हाफ के 25 मिनट के बाद से मोमेंटम फुल्ली शिफ्ट हुआ, जिसका फायदा मिला जस्ट हाफ टाइम के बाद, सेकेंड हाफ शुरू होने से पहले ओडिशा एफसी को, एंड वो मोमेंटम अभी भी कैरी कर रहे हैं ओडिशा एफसी। Oh yes, they are, and there you could see, right? I think Arvind has gone for a more attacking formation with that 4-2-2-2, and now it's kind of more clear why we have been seeing him attack a lot through those wings, and that is a kind of an access that he's getting over there. A little bit of a replay there you could see, right? Virgil van Dijk not making that crucial intervention over there. Very difficult. It's so difficult to play a switch at that point, right? Because what Nate was doing was making very quick passes. And you need to get it to Virgil van Dijk. And in just trying to trigger it and it getting red. And till then, pura raita fell chuka tha. And well, he ended up conceding a goal. So at this point, Jamshedpur FC, they will have to somehow try to get themselves back in, and a few changes being made over here. So we'll have to see if that works out or not. But as of now, Nate, he's gotten back the possession on himself. नेट एक बार फिर से, एंड अभी तक अगर देखा जाए ओडिशा एफसी के लिए अगर कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए हो तो वो नेट ही थे। हो सकता है कि ओवरऑल पे पॉइंट हम लोग को उतना दिखा नहीं, लेकिन इन्होंने परफॉर्म किया, और इस बार एक बार फिर से एक गोल मारने का मौका था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी देखिए जिस तरीके से इधर अटेम्प्ट ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहा है, जिसके बदौलत प्रेशर इधर धीरे धीरे करके जमशेदपुर एफसी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। यस, एंड ये जो कंसिस्टेंसी ओडिशा एफसी के लिए नेट अभी तक बना के रखे थे वो अभी पे ऑफ कर रहा है, क्योंकि वाकया भी अभी आ चुके हैं फॉर्म में पिछले गेम से। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ओडिशा के पास भी एक अच्छा खासा चांस है इधर से आके भरने का, बट एक फाउल एंड जिसकी वजह से एक फ्री किक मिलेगा टीम जमशेदपुर को। Oh yeah. But the question is, what can they convert from around here, and what are the other avenues that they really need to look forward to? Do they go for something else? Do they make a few more substitutes? Because I think I saw Theo Hernandez coming up, and with R9 this could be a good chance, but wanted to pass a little towards Ronaldinho. Well read by KDB. So now we are seeing a lot of KDBs also coming into play, because I think there were only a handful players who used to start KDB. I think one of them which was CJ, but this is a perfect chance still. Chance alive. Making a mistake too many there, Nate. Making those wrong charging tackles. As a result, Arvind has managed to get one through in. There you could see
Even the keeper was brought a little bit forward. And suddenly, now, Nate has to revisit his plans, rethink it once again, as even Jamshedpur FC, they have also changed the formation at this point with 4-3-2-1. We have seen majority of the top players that in the ISL, they kind of go for that 4-3-2-1 ultra defensive tactics formation, right? And then they play a Mm. lot on those counter attacks. They get enough men up, and then they kind of chain the passes on, and then they tend to score a goal. So let's see, TT, what do you think at this point should Arvind do to try and get the winner? And the same goes for Nate as well. Mm. बट आई थिंक ये मोमेंट पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो फ्रेश लेग्स है उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही होगा, जो कि अभी करने भी वाले हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा इधर विंग प्लेस। कौन बेहतर विंग प्लेस बना पाएगा, क्योंकि बीच में से अगर आप प्ले बनाते हो तो उस पे क्या होता है, उस पे डिफेंडर्स को ज्यादा जो पोजीशन है वो चेंज करने की जरूरत नहीं होता। आप बीचों बीच से निकलते रहते हो, जिसपे 2 डिफेंडर या फिर 3 डिफेंडर काइंड ऑफ वो डिपेंड करता है फॉर्मेशन के ऊपर, ऑलरेडी रहते हैं। एंड थोड़ा बहुत पता चलता है कि यस इधर से सीधा पास निकलने वाला है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप विंग से अटैक बनाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। या तो आप क्रॉस कर दो, या फिर आप प्लेयर को लेके कट इन करो, फिर ओवरलैप पे जाके आप थोड़ा स्लो टाइम लेके खेल सकते हो। तो मुझे लगता है कि इधर विंग प्लेस जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करने वाला है। जो भी इधर विनर स्कोर करेंगे शायद विंग का उस पर बहुत ज्यादा हाथ रहेगा। Arvind has been trying actually to, press through the wings. It did not work out in the first half. Nate sort of went through it. Maybe a box-to-box approach might, because, if you could just do what Nate did, right? Just perfectly chain your passes, create that routine, make it work, then things could have looked better. Even Theo Hernandez, like, he had his hat on his head at that point. He's like, मुझे pass क्यों नहीं दिया? मैं तो खाली था. And did not have a lot of time to process that. But for now, with Ronaldinho, this is a perfect chance, and Arvind will convert it. A big sucker punch for Nate, as he is completely bamboozled, stupefied into what has gone wrong for him. Such a huge defensive collapse. Pele had all the space, all the time in the world to take a shot over there. And Arvind did not make any mistake. Also, Green timed that to perfection. And Jamshedpur FC have turned the tables, TT. क्या शानदार गोल था। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जब उधर रोनाल्डिनियो की तरफ से बॉल टॉस किया गया था, उसी जगह पे बहुत कुछ राइट लेफ्ट होता हुआ दिखा। एंड एक पास डिफेंडर्स भी कंफ्यूज हो गए थे, और विद पेले अगर आप शॉट लेते हो वो नेट्स के पीछे जाके ही फिनिश होता है। सो फाइनली जमशेदपुर एफसी उनके पहले विन की तरफ बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी भी 14 मिनट्स बाकी हैं, तो 14 मिनट्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जमशेदपुर एफसी अगर अरविंद इधर से मैच को जीत सके तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा चांस रहेगा। और अगर ओडिशा एफसी आज के इस मैचअप को हार जाते हैं, फिर वो एक बार फिर से 11th पोजीशन पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 पॉइंट है जमशेदपुर के पास। एंड अगर उनको 3 मिले तो वो 4 पॉइंट्स पे भी आ सकते हैं, और एक मैच कम भी खेले हैं। सो उनके पास उसका भी एक हल्का फुल्का एडवांटेज है। बट लेट्स सी, ये सब कुछ हम लोगों को टाइम ही बताएगा। बट इस मैच, इस गेम के अंदर एटलीस्ट जिस तरीके से हम लोग को अरविंद का परफॉर्मेंस आता हुआ देखने के लिए मिला आखिर के कुछ मोमेंट पे, वो लाजवाब। बट इटनेट, क्या वो इधर छोड़ने वाले हैं? क्या वो इधर एक और गोल स्कोर कर देंगे? आगे बढ़ रहे थे, एक अच्छा चांस मिस हो गया। I felt like he had a chance there, a little bit of an opening, but sadly not capitalized. In fact, Nate has gone on an ultra attack, so he has to constantly apply heavy pressure, and at this point he has to defend with all his life and might. No, Nate could have gotten a little bit in. The panic sort of setting in has gotten in David Ginola. Let's see what can he make out of this one. A good chance with Erling Haaland, and talented to take the shot. A right effort, I must say.
But a crucial tackle there. And Jamshedpur FC, now's the chance. Just hog the ball and end it over here. Oh. Why? So, one more time. शायद ये आखिरी अटैक हो सकता है. Right hand side से Zarzinho. Chinola. Pele. Mbappe. Oh my God. वैन डे सार की तरफ से आया सेव और थियो हर्नांडेज कंट्रोल नहीं कर पाए. तो अभी भी खतरा टला नहीं है. बट फाइनली शायद टल चुका है क्योंकि इस बार गोल किक मिलेगा और अपने ही प्लेयर्स के पास बॉल रखना ज़्यादा पसंद करेंगे अरविंद. और अरविंद को भी पता है कि ये जीत कितना ज़्यादा मायने रखते हैं उनके लिए क्योंकि अभी तक सीजन उतना खास इनके लिए गया नहीं. थियो हर्नांडेज एक गलत पास. क्या ये आखिरी जगह पे आखिरी मिनट पे ये गलती भारी पड़ेगा जमशेदपुर के लिए? बट नहीं, इस बार डे ब्रुयना बॉल छीनेंगे और मैच खत्म होगा 2-1 के साथ. जमशेदपुर एफसी फाइनली अरविंद अपना पहला गेम इधर जीते हुए. बट अभी भी रास्ता बहुत बाकी है. दिल्ली अभी दूर है. बट या नेक्स्ट कोऑप पे अगर वो एटलीस्ट ड्रॉ निकाल देते हैं तो 1 पॉइंट सिक्योर कर लेंगे और अगर जीत जाते हैं देन 3 पॉइंट इधर सिक्योर कर सकते हैं. At this point, this is such a nice thing for Arvind to get a W because Odisha FC's co-op play has sort of not been there, right? And next game where Jamshedpur, if they get in their old co-op form back in, then they could seal those 3 points here and now. But Nate quite displeased with his performance tonight, especially in his second half. His defense was looking so good in the first half and suddenly those panic plays, one of which was this, and giving so much room there to Pele, nobody to guard him. And Arvind made no mistakes in scoring goals over there, and as a result suddenly things have changed. It kind of looked like, the way the game was progressing, it looked like an Odisha FC game. Especially in the first half, felt like we could see a few more goals. And then Nate just bottled it up. And things have gotten so much more intense for them. Now the big question is, how are they going to stage a comeback in the co-op game? That has been their weakest forte up till now. But anything can change. Let's take a look at the scorecard. And there you have it. A 2-1. Very narrow victory for Arvind, but a victory is a victory because DK, I think DK has been one of those players who barely loses his individual games, right? Lately, DK has been in good form and DK has been playing really well. Even went on to beat Shagnik once, if you remember, and has scored some beautiful goals in the eISL. That Lionel Messi free kick is one worth remembering. Yeah. But now, TT coming to that co-op matchup. This is where the question arises. How deep do Odisha FC need to dig to get through the minds of Arvind and DK? What do you think they need to do right off the get-go? I think सबसे पहले तो उनको गलतियां नहीं करना है. कि सबसे पहला जो बॉक्स है वो टिक करना होगा कि गलतियां बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि जब भी गलती करेंगे उस टाइम पे कैपिटलाइजेशन आएगा. और आज अरविंद के इस विन के बाद जमशेदपुर तो फुल ऑन अटैक पे जाने वाले हैं. अपना सब कुछ लगा देंगे क्योंकि उनको पता है कि उनका 5th मैच ऑलरेडी हो चुके. ये उनका 6th मैच है और अभी तक वो पीछे चल रहे थे इन टर्म्स ऑफ मैच. सबके पीछे चल रहे थे और वो भी बॉटम में भी है. तो आज वो इस गेम को जीतने के लिए अपने सारे स्ट्रेटेजीज जितने भी प्लान्स अभी तक बनाए होंगे सब कुछ लगाने वाले हैं. सो एक भी गलती करना ओडिशा एफसी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है. और ऑन द अदर हैंड ओडिशा एफसी को भी ये मेक श्योर करना होगा कि वो कहने की जो शुरुआती जो फर्स्ट गोल है वो उनके तरफ से आए और उनका जो डिफेंस है वो एक साथ एक स्ट्रक्चर पे बने रहे. क्योंकि अगर डिफेंस उनका सही से स्ट्रक्चर वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे फिर
प्रॉब्लम्स होगा, जो कि हम लोग को इसके पहले बहुत बार दिखा है उनके कोऑप पे। एंड कोऑप तो उनका काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट है। जब भी ओडिशा एफसी की तरफ से हम लोगों को गेम दिखता है उस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है देख के खेलना ही होगा, क्योंकि ओडिशा अगर आज हार गया फिर जमशेदपुर ओडिशा के ऊपर आ जाएगा और ओडिशा चला जाएगा एकदम बॉटम पे। At this point, Odisha FC, this has to be one of their most crucial games because, well, when it began and they were going through their losing streaks, we were always saying, they still have few more matches. They can make that comeback. It took a long time for them to get the W. And seems like DK and Arvind have set their eyes on getting that first goal instantly, right off the bat. But Odisha FC could be quite threatening on the counter, but yeah, Mbappe, the run had been triggered very quickly. So one of those things that I feel personally, Odisha FC, like you said, the defense has to be strong, and in co-ops it's very difficult to constantly manage your defense because you've got not one player, you've got two players controlling, and if even one of them gets out of position, you're giving an easy access to scoring a goal. So that is one of those areas I feel they really need to work out. And if they can do that, I mean, Nate was good defensively, but the second half defense was kind of all over the place. So right now, again, Jamshedpur FCTT, they're on their attack, and they have been now just trying to pass the ball, and not a lot towards the wings, but a little box-to-box approach, which I like for now. But इधर देखिए बॉक्स टू बॉक्स तो हम लोगों को कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, बट इस बार ओडिशा एफसी काफी ज्यादा एग्रेसिवली अटैक पे जा रहे थे, लेकिन वही है कि एक छोटा गलती और आपका पूरा अटैक टूट जाता है। एक मिस पास हुआ था, उसका फायदा क्या उठा पाएंगे इधर जमशेदपुर? एम्बाप्पे राइट हैंड साइड से ऑलरेडी हकीमी आगे आ चुके हैं। एम्बाप्पे, बट थियो हर्नांडेज फाइनली बॉल जीत के इस बार के लिए जो खतरा बना था उसको तो टाल चुके हैं। बट आप एक चीज देख सकते हैं कि हकीमी को इस बार ऊपर खिलाया जा रहा है, हकीमी को इधर पुश किया जा रहा है, बट जो लेफ्ट बैक है कैप्टेविया उनको नहीं कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। इस बार ओडिशा बहुत ही ज्यादा बॉक्स टू बॉक्स गेम चलता हुआ, मेसी बॉल चलेंगे लेकिन एडर मिलिटाओ उनको फ्री बॉल देंगे नहीं, जिसकी वजह से फिर से 1-2 चलता हुआ। तो बॉक्स टू बॉक्स इसी तरीके से गेम चलता जाए, और व्हाई नॉट, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो मैदान है जिधर कोशिश करेंगे जमशेदपुर कि वो इधर से विन निकाले ताकि उनको पूरा 3 पॉइंट मिल जाए, और ऑन द अदर हैंड ओडिशा एफसी अपने सर्वाइवल के लिए इधर जीतने की कोशिश करेंगे। इस मैचअप के अंदर कौन अभी आगे जाएगा वो तो टाइम ही बताएगा, बट 21 मिनट के गेम पे एक चीज तो पता चला है कि दोनों का ही 50-50 चांस है इस मैच को निकाल के लेके जाने का। Yeah, I mean, both of them do have chances still now because both of them have been creating those moments. Yeah. That we cannot tend to believe that yes, this could be a goal. This could be a goal. It's a good chance in the making. But Odisha FC, they have been a little too overwhelming over here. We've seen on those few occasions a little impatient and need to be having a little bit more stronger fortitude over here because one slight miss and then you are opening yourself for a counter attack. But for now, Jamshedpur FC, look at that. Oh, could have been a good chance, but still now will take the shot. But Courtois just diving in on the left, making the save. Jamshedpur FC, this was very threatening. And more often this sort of goes in. Courtesy to the goalkeeper, was saved, but now has sort of exposed them to maybe a counter attack. But I was kind of surprised. They went for a shot that nobody would have expected from that angle, but to no avail. And now they're back on trying to set up another attack again. Yes. फिर से एक कोशिश, फिर से एक मौका, बट इस बार का मौका बहुत शानदार दिख रहा था। गोल कैसे नहीं हुआ? आई थिंक थोड़ा श्रिंक हो गया था एंगल, जिसके वजह से वैंडेसार कोर्तुआ को उतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं इधर।
देखिए कॉर्नर किक मिलते जा रहे हैं तो खतरे अभी भी मंडराता हुआ जमशेदपुर के गोल के ऊपर। जमशेदपुर एफसी, What was that? ओह माय गॉड, देखिए कंट्रोल में है। क्या हो रहा है, लाइक आज इस गेम के अंदर एटलीस्ट समझ में आ नहीं रहा कि कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन कर नहीं पा रहा। Whatever it is, the timing, the synergy is completely, off right now as things are. But how? And I think at a point, Jamshedpur FC so far, I must say, they have been the better co-op team right now, at least in this game. The chances have looked much better. Yes, they have flushed a 1 or 2, but this could be an interesting one. Oh, a little too much possession, but again, ball stolen away. Nice work from Lionel Messi over there. And I felt, okay, so I thought he would just pass out on towards Ronaldinho and could press through that left wing. But instead, what they have done is they have gone back. And I think they want to play that possession game, want to make it airtight. With Rude Hullet to R9, a good step over, but losing balance over there as now Jamshedpur get themselves on the ball. जमशेदपुर एफसी बॉल कंट्रोल तो थे बट नहीं, इधर ग्राउंडेड रखते तो शायद एक बहुत बेहतर मूव बन सकता था, लेकिन उसी जगह पे बॉल लूज करते हुए दिखे और बॉल अभी मिल चुका है। ओह माय गॉड, मुझे लगा एक बार पेनल्टी हो गया, बट नहीं, थोड़ा सा पहले इधर फाउल किया गया था जिसकी वजह से फ्री किक मिलेगा, बट जिस एंगल से मिला है आउटफुटेड शॉट में भी काम कर सकता है। लिया गया था शॉट फुल पावर के साथ, बट अभी के लिए फर्स्ट हाफ हुआ खत्म। और देखिए जब जब शॉट लेते हैं तब yes, लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। And this got so close. DK has got that mastery, right? And he knows with Lionel Messi the exact power, the angle that you need to put. But this time, unfortunately, it got saved. And fortunately for Odisha FC, they go into the halftime with not conceding a goal. Because their attack, I'm still trying to process what was happening there. Clearly, you could see, there was lack of communication between the players. The players were not getting into right places. Even if the runs were getting triggered, they were going off, and they did not have a lot of time to ponder over it. Instantly went into the game, and right off the bat, we get to see a long pass being played towards Jazinho. This is a golden chance for R9. Oh, I felt a little bit of room for Messi was there had he made that one extra pass. So you can see that panic is sort of setting in. They're getting very impatient, in these final thirds. And this is one of those concerning reasons for me, to be honest. या देखिए बीच बीच में ये जो मौके बन रहे हैं, इस मौके पे ही कन्वर्जन निकालना होगा। अगर नहीं निकाल पाते हैं फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले मैचअप पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत क्लिनिकल थे उधर मुंबई सिटी एफसी, बट इस बार इस मैचअप के अंदर जो क्लिनिकलनेस है वो दोनों ही साइड से थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन फिर भी अभी के लिए तो जमशेदपुर एफसी आगे है, और इस बार एक गलती हो सकता था अगर वैन डाइक थोड़ा भी लेट करते, या तो ये फाउल होता या फिर एम्बापे बीच से रन निकाल सकते थे, लेकिन खतरा नहीं टला। ओ पावर शॉट, राइट फुट से कोशिश चाल, लेकिन डिफ्लेक्शन आया जमशेदपुर की तरफ से, फिर लेफ्ट फुट पे चला गया और लेफ्ट फुट का शॉट भी गया, तो बहुत जल्दी बहुत कुछ हो गया। I think one positive thing about Odisha FC is now they're at least taking a lot of chances, and they've been playing quite aggressive. You could, even see that I think they've applied constant pressure over here. Time and again, we see players challenging Jamshedpur FC, not giving them that chance to just roam around freely. This was another one of those instances where we could see this happen. But right now, Jamshedpur FC, they really need to calm down on their nerves. And Odisha FC, if they want those 3 points, they have to win it. So they'll have to score a goal, and it's going to be difficult, but this is a golden chance with Lionel Messi.
for that shot, not green time though, but did not have a lot of time to ponder over it. Had he not double pressed over there, it would have anyways been tackled and things could have gone wrong. But now with R9, a bit of a space for De Bruyne to Messi, but no, instead gives it to Jairzinho. So Ruud Gullit. Odisha FC have been quite attacking, but we have seen these sort of attacks eventually end up being counter-attacked by the team and could concede a goal. So they have to be very watchful over their defenses. But again, being so relentless, if keep pressing on like this, maybe TT in the next 10-15 minutes, we could see a goal finally coming out of OFC. Yes, for sure. Pot counter पे जमशेदपुर FC और हो गया गलती. एंड ओडिशा एफसी आखिर के कुछ टाइमों पे जिस तरीके से मोमेंटम लिए है अपने पास अपने कंट्रोल पे, उससे ऑब्वियसली गोल आता हुआ तो दिख रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि इतना बार अगर प्रेस करेंगे फिर जमशेदपुर का डिफेंस एक बार ना एक बार तो फेल होगा ही होगा और उसी पे कन्वर्जन निकालने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन इस बार इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर ज्यादा गए कंट्रोल. रोनाल्डो जार्जिनियो लेफ्ट हैंड साइड से निकलने की कोशिश था लेकिन उनको ढूंढा नहीं गया है. खोलने की कोशिश जमशेदपुर को. एडम मिलिटाओ बॉल जीतते हुए रोनाल्डो टुवर्ड्स एम्बापे पेले एंड इस बार देखें काउंटर पे जाएंगे बहुत तेजी से. ट्रांजिशन ऑलरेडी हो चुका है लेकिन बिल्ड के टाइम पे ही बॉल कंट्रोल खोते हुए. Yeah, even the pauses have been queued right now. This is a perfect chance with Mbappe. He's taking all the time in the world and this gets converted. Oh my goodness. Oh dear Lord. Hit the crossbar. But when you have the luck in your side, the angle was just right. Gets in. And we were talking about this. Odisha FC, they had been quite attacking in the second half and will reap the rewards. Will go 1-0 up in a very crucial moment. Because from what I can see, their style of play, they've gone for constant pressure and also for PAPL. That is pressure after possession loss. As a result of which, Jamshedpur FC are not getting that breathing space also. And now Jamshedpur FC have so much to figure out. Because Odisha FC at the 70th minute mark, they can easily get in new legs in and can go on repeating this over and over again. But Jamshedpur FC, they will have to score a goal because if they do not over here, TT, then we have a game on our hands. The third match could be the decider. Yes. And वो देखने में बहुत बहुत ज़्यादा मजा आएगा for sure. But 73rd minute आगे ओडिशा एफसी. एंड देखिए कैंटोना को लेके आया गया है तो इस बार बहुत ज़्यादा मजा आएगा. हलांड हुलीद हलांड लेफ्ट हैंड साइड से कैप्डेविया जिनोला बहुत ही शानदार मौका लेकिन खोटू आगे आए इसकी वजह से बचे नहीं तो एम्बापे फिनिश कर देते अभी. You could see the intensity right now from both the clubs. Both of them looking forward for a goal. Odisha FC for the second and a decisive goal, and Jamshedpur FC for that equalizer. And Odisha FC at this point in those dying phases, we have seen even in the last game they had conceded one with Eric Cantona. He's got that shooting prowess, passes it on towards Hakimi, but Virgil van Dijk makes a very crucial intervention and now has so much space there. And he will make no mistake with R9, just pacing in with the ball. Little bit of a ball roll scoop and now takes a shot. Much more balanced, much more like it. As Odisha FC might have just sealed the deal. And was that a Sue? It's like a Sue celebration. Was it though? Yeah, mostly. Most probably yes. But 2-0 के साथ finally जो भी क्वेश्चन थे मन के अंदर कि क्या इधर ड्रॉ निकाल पाएंगे जमशेदपुर, वो सभी को अभी के लिए पीछे छोड़ते हुए और ये मैच से
एक विन निकालने की कोशिश किया जाता हुआ ओडिशा एफसी की तरफ से, बट इस बार जिनोला टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, Oh, लेकिन nice. नहीं, बेहतरीन डिफेंस एडे मिलिटाओ की तरफ से। Yes, finally the defense is not choking. Now this is much more like it for Odisha FC. A beautiful long ball being now played towards Erling Haaland. Waste no time, instant ball rolls to R9. Takes a shot, but Virgil van Dijk this time makes the save. But the question here is, or in fact, well, the statement goes out is that I think it's a little too late for Odisha FC at this junction. Because, in fact, it's too late for Jamshedpur FC at this junction. That 2-0 deficit in the dying moments of the game. How do they recover? Looks impossible. But could salvage a goal and will do. Will do. 2-1. We have seen comebacks like this. We have seen East Bengal FC do the impossible. Even we have seen Hyderabad FC against Bengaluru. But right now, they cannot afford to give these corner routines, and now they're going to just beat the clock. It's already 2 minutes in. They're going to take their sweet time. They know the victory is theirs and will just go for a power shot. It's all right. They know it's done and dusted. Went down to the wire in that last moment, but thankfully Odisha FC did not bottle it. And folks, we finally have a game on our hand. It is going to come down to a decider between DK and our lovely Vagya. द डिसाइडर गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है ये मैचअप अभी के लिए। हो सकता है कि पॉइंट्स टेबल पे सिचुएशन इन दोनों ही क्लब्स का उतना खास नहीं है, लेकिन ये मैचअप जो जीतेंगे उनके लिए खास बन सकता है, क्योंकि उनके लिए जो ये टॉप 6 पे जगह बनाने का मौका है वो थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखेगा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो गोल्स आज स्कोर किए गए हैं ओडिशा एफसी की तरफ से लाजवाब, और इस जगह पे तो जमशेदपुर एफसी का पूरा जो डिफेंस है वो तितर बितर हो गया था, और उसके बाद आया सेकंड गोल, एंड उसके बाद तो काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं टाइम बचा ही नहीं था, बट फिर भी एक गोल आता हुआ दिखा था जमशेदपुर एफसी की तरफ से, बट वो काफी नहीं था। Yeah, and I think the kind of a second half Odisha FC that we got to see, we would want to see more of that on those corps. They were looking so much more balanced. TTV could see on multiple occasions. Now the synergy had set in. Now the players exactly knew what they had to do and what their roles were. They started exploiting those wings. We would see a plethora of those lobbed through passes being played, and they were all doing the job. And for Jamshedpur FC, little panicky in that defense. Even that R9 goal, the second one that Odisha FC scored, we could see Virgil van Dijk had a little bit of a room, but he turned over. But right now, folks, let's take a look at the scorecard and see how there has been a change. So Odisha FC finally getting over their co-op horrors, nightmares, and getting that win, which is a very positive omen. But would not like to jinx it. But who do we jinx for? Because DK and Bhagya, we know, both of them had their fair share of bad luck in the past, and Bhagya more recently. DK has been exceptional though, but DK has played those games where he had not lot to fight for. So today, DK, a lot of responsibility on his shoulders, and he has to do something, or in fact everything, against Bhagya to win it. And for Bhagya, likewise, even he did this even in the past against East Bengal FC, managing to best Shantan and win the game. So the question is, can he repeat it again? Now, TT, if I were to ask to you at this point, who do you think किसका पलड़ा भारी है? किसी का नहीं, दोनों का पल्ला सेम वेट का है अभी के लिए तो, क्योंकि देखिए हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि यस, पिछला गेम जरूर जीता है डीके ने, बट आई थिंक जो सिचुएशन लाइक भाग्या जो पिछला गेम है वो जीते थे, लेकिन वो अभी कंटिन्यूअसली जीतेंगे कि नहीं, और उनका जो लक है वो कंटिन्यूअसली उनका साथ देगा कि नहीं, वो हम लोग को आज पता चलेगा। और सेम विथ
DK as well. So क्या होगा क्या नहीं उस पे तो मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं जस्ट एंजॉय करना चाहता हूँ इस पूरे गेम को कि किस तरीके से जाता है, क्योंकि ये डिसाइडर है और मैं नहीं चाहता कि ये ड्रॉ पे खत्म हो, क्योंकि दोनों ही क्लब्स को चाहिए 3 पॉइंट्स, वो चाहे किसी के पास भी जाए बट किसी एक के पास जाना चाहिए वो 3 पॉइंट्स, तभी जाके उनका फायदा होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है बट लाइक आगे बढ़ना इधर से। वरना तो सब मतलब खत्म ही है. And both these teams, in fact, both these clubs have so much to fight for. Like we have already discussed, friends, that this is the moment. We are approaching our end game of the league stages, and now teams can't just settle with a draw, right? It has to be either this way or just stay in your homes, because for the playoffs, the players will be finally reuniting with each other in person, and a lot of happy faces. We love that. Last time it was a complete LAN studio event, but this time things have gone online. But we've kept the best for the last, right? So playoffs. So that's going to be the dream for all these players to get to meet once again with each other. And right off the bat, you could see DK trying to look a little bit dangerous, posing threat, and Jamshedpur FC from left to right, Odisha FC from right to left. The big question over here, friends, is who is going to emerge as the victor of this battle? यस, वही जानने के लिए हम आप लोगों को देखना होगा ये पूरा गेम, और ये 90 मिनट्स में से 7 मिनट तो हालांकि ऑलरेडी हो चुका है, बट मुझे लगता है कि ये बॉल कंट्रोल, फिर उसके साथ आप कितने पासेस खेल रहे हो, वो सब कुछ सिर्फ आपके गेम को स्टाइलिश बनाने के लिए होते हैं। इधर गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन करने वाले हैं वो देखना होगा। अभी के लिए बॉल छीना गया है ओडिशा एफसी, वागिया कॉन्फिडेंटली पासिंग करते हुए इस बार जार्जिनियो के पास, बीचों बीच ऑलरेडी रोनाल्डो, मौका काफी अच्छा, लेकिन वो पास नहीं निकाल पाया। क्या ये पेनल्टी है? What? Oh my God! Yes, it's penalty. And he scores. This guy. Vagya. Seems like his good times are back. Yes. He started off his campaign with conceding a penalty and facing a red card. But this time it was the other way around. I'm telling you, this game has a way of playing with your hearts. And DK can't just believe it. And interestingly, Vagya has gotten in Zinedine Zidane, one of my favorite players. And it's going to be interesting to see how is he gonna play him around. But again, after conceding that goal, yet under threat. Once more, this time. Oh, had that cross been a little back, Mbappe could have maybe made the run there. But it's fine. Vagya can take it, because again, he's on his attack. Yeah. As of now, see towards Ronaldo. मौका देखिए बनाने की कोशिश है जमशेदपुर की तरफ से, बट बहुत ही शातिर तरीके से इधर डिफेंडिंग करते हुए कैप्टिविया के साथ ये आपको एक फायदा मिलता है कि उनका जो पोजीशनिंग है, एआई बहुत अच्छा है, जब जब जिधर जिधर जरूरत है उधर ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, अगर आप खेल रहे हो 11 प्लेयर्स को आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है, उस पर जरूरत होता है थोड़ा एआई की, एंड वो चीज़ कैप्टिविया के अंदर तो बहुत अच्छा है। बट सेकंड गोल इन मेकिंग, क्या ये मूव सफल हो पाएगा? वर्जिल वैन डाइक जर्जिनियो को उड़ा के चले गए। इनकाउंटर, जमशेदपुर इनकाउंटर, रोनाल्डो अभी भी बॉल है उनके पास। बहुत फिजिकल गेम जाता हुआ भाई देवे। Yes. Kind of feels like a derby. But I think, is he offside? No. He's onside. He's broken free and he'll take a shot, but no! Vagya! How can he miss that one? Such a good build-up play there. It was 1v1. Could do 176 other things.
Goes for that shot, but no time to remorse as he's yet on his attack. Wow, I'm loving this Bhagya tonight. Oh, still the ball there. DK barely manages to scrape through. Still out for a corner. TT, where has this Bhagya been all this time? Oh my God. आज आई थिंक सब कुछ हो जाएगा जो जो होना चाहिए दूर से एक शॉट बट फाइनली सेव किया गया है जिस तरीके से ये फिनिश मोस्ट प्रोबेबली लिया गया था आज ओडिशा एफसी वागिया सब कुछ एक साथ कहने के इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत ज्यादा लाजवाब तरीके से Abtabia towards Hakimi. ये पूरा चढ़ के खेला जा रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से एंड ये करना भी होगा क्योंकि एक गोल का लीड वो लीड नहीं वो ट्रैप होता है और ये हम लोग इसके पहले बहुत बार देख चुके हैं तो क्या ये गोल और होगा ओह माय गॉड कोर्तुआ को आज इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है मुझे लग रहा है कि आज वो सोच रहे होंगे कि मुझे तो शायद पूरे महीने में इतना काम नहीं करना पड़ा था सैलरी बढ़ाओ मेरी but at this point one thing I really liked from Wagya's side is he's not letting DK get on the ball at all. Look at the way he's just cutting those passes and then attacking wise he's been so good. But that was one of those chances, the previous one, where he could have gone for the far post instead of the near post. Had chances, but wow, these risks that Wagya is taking. Because had he had Virgil van Dijk been beaten over there, then DK could have scored one goal. But Wagya knows that 1-0 goal is literally nothing. Any moment DK can change it. So he's constantly on the lookout for the second. And DK has to find a way to, surprise Wagya over here. He could see little, intent to charge for the ball, then realize that no, won't make that play, and realize that yes, it's time to end it over here. Force the ball out of play as we go into half time with Wagya having that 1-0 advantage, which could have been potentially maybe 2-0 or 3-0 also. With the way Wagya has been playing, and DK hasn't really, started feeling himself. To be honest, look at that. 6 shots have been taken by Wagya. Clearly the better player. I mean, in all by all aspects, right? The way he's been controlling his midfield, the way he's been receiving those passes, and the way he's been creating chances. Even with those lob through passes, multiple things that he has done, trying to create crosses, is showing so much of those flavor on the table that DK is kind of left flabbergasted into thinking, what's going on? How do I counter? Yes. एंड वो जब तक लाइक आंसर नहीं मिलेगा तब तक आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी तरीके से फेस करने पड़ सकते हैं बट जार्जिनियो की जगह पे पहले डे ब्रुयने की जगह पे बेलिंगम तो बहुत ही जल्दी हाफ टाइम के ऊपर ही चेंजेस कर चुके हैं तो आज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते पर इस बार ओह माय गॉड नो ऑफ साइड हो गए जिस तरीके का मूव बन रहा था ऐसे वो अगर जिडान को नहीं भी देते फिर भी एक शॉट अटेम्प्ट कर सकते थे Again, Wagya. This time, however, DK little sound. I really felt like DK should have taken a little more time to, process things and let Wagya off his groove a little bit. But this is a good chance built up for DK. And offside. Oh, this hurts. This hurts a lot because Messi was doing so much over there. Suddenly, the flag gets raised. Yeah. And उसी जगह पे
उड़ीसा एफसी बहुत शानदार एक पास था, लेकिन जमशेदपुर एफसी की तरफ से खतरे को तो टाल चुके हैं, लेकिन क्या वो इधर से भेद पाएंगे डिफेंस को? वागिया का डिफेंस आज काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखा है। एम्बापे टुवर्ड्स डे ब्रुयना, रूडलीत, एक बार फिर से डे ब्रुयना, लेकिन मेसी खाली थे। Yeah, little bit of a lack of composure there from DK's side, but look at DK. You know, this time he does not want to let Bhagia create any attack, and how high he is pressing at this point. Quite evident. So many men to pass, but who does he pass for? But the pressure on DK is still there. So DK has gotten a little bit more threatening this half, that's for sure. But Bhagia, he's not letting his defense come up. He's careful because he knows one small mistake and he's done for. I liked what he did with Hakimi there. A nice pass. Well received for R9. But from here onwards, where does he go? As long as he's, you know, just keeping the possession, it's getting more frustrating for DK. Wanted to step over, but Virgil van Dijk makes a very crucial intervention over there. But this could be a good chance. Again, Bhagia getting his players into the right spot, getting tight on his defense. Let's see with Hakimi, passes towards Mbappe, but Rudolet saves the day. Yes. रूडलीत अभी के लिए तो अपना पूरा काम करते हुए एंड करना भी चाहिए, बट इस बार एक बार फिर से अटैक पे, एंड ऐसे बहुत सारे थ्रू बॉल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट फिनिशिंग होगा कि नहीं हो पाया। कौरतवा एक बार फिर से अपने दस्ताने लेके आ चुके हैं, बॉल अपने कंट्रोल पे, बॉक्स के बाहर आ गए थे एक बार के लिए। थोड़ा भी अगर इधर उधर होता कंट्रोल पे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे। एंड गोलकीपर्स के साथ ऐसा होता भी है, या आप कंट्रोल करने जाते हो, बॉल थोड़ा दूर हेवी टच हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं कभी कभार। लेकिन विद दैट बॉल गया साइडलाइन के बाहर, थ्रो इन मिलेगा उड़ीसा एफसी को। बट देखिए फॉर्मेशन वाइज काफी बैलेंस्ड इधर दिख रहे हैं उड़ीसा एफसी, इसी वजह से शायद डिफेंस में भी इतना स्ट्रांगली और इतना जल्दी ट्रांजिशन पे जा पा रहे हैं उड़ीसा एफसी अपने अटैक से। Yeah, you know, this is one thing I liked about Odisha FC is that even when the defenders are getting out a little bit, they're instantly coming back to their position. You know, there's no wasting time over there. They realize, you know, they have to be very tight. They cannot give any sort of space to DK, and that has been very frustrating. And this point, I think we get to see a few changes in formation. Maybe Bhagia could opt for a more ultra defending style of play, get 5-4-1 in, and DK on the contrary could look more threatening, could go ultra attack 4-2-4 or 4-2-2, whatever he prefers. But he has to manage to score an equalizer somehow, because at this point, Jamshedpur FC, they are at the very bottom of the ocean, and the only way out is going up. And DK has the chance to be the hero for their club tonight. And David Ginola being brought up. And this is a golden chance, DK! How could you miss this one? Oh, Lord! DK! Bhagia has just been given a boon. How did he survive that, TT? with his भाग्य शायद बहुत ही भाग्यशाली। अचानक से हो गए पिछले दिन से, मुझे लग रहा है हवन करके आए हैं, लेकिन आखिरी 12 मिनट, और अगर ये 12 मिनट वो सरवाइव कर गया और ये डिफरेंस अभी तक बना रहा, तो ये 3 पॉइंट और जाएगा ओडिशा एफसी के पास, और एक जंप दिखेगा हम लोग को डायरेक्ट, और वो जंप होगा बहुत जोरदार और जबरदस्त, क्योंकि अभी हैदराबाद एफसी 6 पॉइंट पे है, एटीके मोहन बगान 6 पॉइंट पे है, बट इस बार ओह माय गॉड, आज दोनों ही साइड से गलतियां हो रहे हैं बहुत सारी, बट वागिया ऑलरेडी ये गोल कर चुके हैं, इसी वजह से हम लोगों को उतना पता नहीं चल रहा ओडिशा एफसी के गलतियों के बारे में, या फिर हम लोग उतना फोकस नहीं कर रहे, लेकिन
गलतियां दोनों साइड से बहुत बहुत सारा हुआ है, क्योंकि ये मौके पे तो कन्वर्जन चाहिए। और नो, सीधा भी शॉट ले सकते हैं, रोनाल्डो है वो। Yeah, that was just what I was about to say. That Bhagya is going for those extra unnecessary passes. Oh, just pushes the defender, and at this point, Bhagya should look at just saving instead of attacking, because these are those points where I've seen, and in fact, I myself have choked so many times, given away the lead after I've been dominating for majority of the half. There you see, like anticipated, 5-4-1, and DK has gone all out, a 3-4-2-1 being bought. And from here, the big question is, can he convert now with the 3-4-2-1? If Bhagya can get through with the counter attacks, then there's chances he could go for a goal. And he has been getting those opportunities. TT, like you said, in that previous run, he could have directly taken a shot instead of going for a short pass, which sort of became the Achilles heels for him, and could not get that 2-0 up. And even looking at this game, which was primarily dominated by Bhagya, but that one goal, TT, that came from a penalty. यस, एंड वो पेनल्टी के लिए अपने आप को बहुत कोस रहे होंगे अभी डीके। ओके, सो हर्नांडेज फाइनली राइट हैंड साइड पे आए हैं। आज सब कुछ सब जगह पे यूज किया जाएगा। ये आखिरी चांस होने जा रहा है। क्या ये आखिरी चांस में गोल होगा? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 3 पॉइंट्स घट के 1 पॉइंट पे आगे पुलिस एफसी के। Oh my goodness, Bhagya had to bottle this one up. Out of every game, had to mess this one up. And now the final attack for DK, and he lets loose of his controllers. Successfully managing to salvage a draw out of this one. Bhagya, ज़्यादा देर के लिए वो भाग्य अच्छा नहीं रहा. And just at the brink of that full-time whistle, where I was constantly just wondering, why is he not hogging the ball? Yes, I know PAPL is there, I know constant pressure is there, but oh my goodness, Odisha FC, how could they mess this one up? How is that a big question? Bhagya, despite dominating both the halves, all it took, TT, was that little bit of a mishap in the defense, giving that space to DK, and DK will not miss the second time. There were two instances. The first time he kind of messed it up. The second time he scored, and such a crucial one at that. This goal. Wow. Yeah. और आखिरी मोमेंट पे गोल स्कोर करना बहुत टफ होता है, क्योंकि टेंशन काफी ज्यादा रहता है आपके माइंड पे, और इधर इस तरीके का फिनिशिंग बहुत देर से अटैक के बाद अभी भाग्य को पता चल रहा होगा कि वो जो बार बार इतने सारे चांसेस मिलने के बावजूद उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया, वो किस तरफ उनके रिजल्ट को लेके जा सकते हैं, क्योंकि उन कम से कम 4 चांसेस मिले थे। अगर वो 4 में से एक भी डायरेक्ट शॉट ले लेते तो शायद उधर एक और गोल आ सकता था, लेकिन वो हर बार सेकंड पास के लिए गए, जिधर हर बार इंटरसेप्शन हुआ और बॉल निकला। सेम विथ अगर हम लोग बात करें इधर डिके के लिए भी हुआ है कि उनके तरफ से भी कुछ चांसेस मिले थे जिसपे वो कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। और अनफॉर्चुनेटली तो मैं कहूंगा इधर भाग्य के लिए कि डीके के जो कोर्तुआ है वो कुछ अलग लेवल के फॉर्म में चले गए थे। बोल रहे थे आज तुम कुछ भी कर लो, मैं एक से ज्यादा तो खाऊंगा नहीं पेनल्टी छोड़ के। चलिए स्कोर कार्ड के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। एंड एक हिंदी में कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, right? And at this point, this is gonna hurt Odisha FC so much. Of course, they have managed to get a point, but bear in mind that they have played one extra game than Jamshedpur FC, and this is not just Jamshedpur FC being the competitors, right? They had to fight for the top 6 berth, and now things are going downhill for them. And for both of them, it was so imperative that they got a victory. But a big question: who the MVP shall be of this game? Is it going to be Arvind?
courtesy to those 2 goals. Let's find out who the MVP is. And there you have it, Arvind. A very nice comeback from his side. And today has been a story of comebacks from Jamshedpur FC. When they were 1-0 down, even in the first game, Arvind manages to score 2. And it has been a similar storyline. Both of the Odisha FC players choked in those final minutes. And this happens a lot. That is why, it's always recommended that you need to have that 3-goal lead. Otherwise, in a game of FIFA, 1 goal literally amounts to nothing. And that last goal that Bhagya conceded, once we saw that replay, I could have a more vivid picture. He mustered up he kind of flustered up that player switch there. You could see if once again if it's being played, or maybe in highlights it will be shown later on. Uh, there was that point where the pass was given. The player switch was not to the right player so that he could come and give the tackle. It went to another player who was behind him. So hence DK had a free shot at goal, and that is such a small margin of error, and that's such a huge difference creator. It costed Odisha FC 2 points over here, which they could have taken home. All Vagya needed to do was just keep the possession, and DK receiving it in that final one shot, hit the stake right into the hearts, and equalized. And what a game it was! I knew it was going to be a thriller, TT, but a last attack thriller we never thought. And this does not end over here, folks. Of course, the matchup has ended. Both the teams have shared points, but right now, what we'll do is go for a short little break, because when we come back, we have the final matchup of the night.